नमस्कार। मैच बिटवीन मलेशिया एंड चाइनीज ताइपे कोर्ट नंबर 1 पर अब से कुछ ही समय में ISTAF वर्ल्ड कप 2025 ISTAF Welcome to ISTAF 2025 match between Malaysia and Chinese Taipei. Match number 1, men's double event. In men's double event, we have Malaysia versus Chinese Taipei. Let's welcome Team Malaysia. ISTAF वर्ल्ड कप 2025 सेपैक्टाक्रो का आज तीसरा दिन पाटलिपुत्र स्टेडियम पे। अब से कुछ ही समय में यहाँ चाइनीज ताइपे और मलेशिया के बीच मैच खेला जाएगा। डबल्स इवेंट मेंस का। मलेशिया लाइनअप: आदिल ऐमान बिन अजवाइन, मोहम्मद नौरजीर बिन मोहम्मद नौरदीन, सब्स्टिट्यूट मोहम्मद फैजाल ऐमान बिन इस्हालीन। Chinese Taipei. Chinese Taipei starting: Li Mingxi, Hu Yu Chang, substitute Sai Cheng Han. ISTAF सेपैक्टाक्रो वर्ल्ड कप 2025 आज तीसरा दिन। पहला मैच यहाँ पर चाइनीज ताइपे और मलेशिया के बीच खेला जाएगा मेंस डबल का। कोर्ट नंबर 1 पर टीम एंट्रीज दोनों टीम की हो गई है। मलेशिया और चाइनीज ताइपे पहला मैच डे 3 का। Very good morning to you all. The first match in the doubles event in the men's section between Chinese Taipei and Malaysia in doubles event. At 2025 Bihar, India, men's double event. Taipei Pass. डबल्स का मुकाबला अब से कुछ ही समय में यहाँ शुरू किया जाएगा। रेफरी का इशारा दोनों टीम को कोर्ट में एंट्री के लिए। मलेशिया और चाइनीज ताइपे मेंस डबल का पहला मैच कोर्ट नंबर 1 पर। मलेशिया टू सर्व। पहला सर्विस मलेशिया का, उन्होंने नेट पर दे मारा। ताइपे को 1 अंक, पहला अंक प्राप्त किया। मलेशिया की सर्विस सीधे नेट पर आकर लगी, इस कारणवश चाइनीज ताइपे को पहला अंक। चाइनीज ताइपे और मलेशिया के बीच ये मैच। ऑल्टरनेट सर्विस इस मैच में किया जाएगा। बहुत बढ़िया सर्विस यहाँ पर
और अच्छी तरीके से खेला इसको और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस पॉइंट को मलेशिया के हक में। और ताइपे 2 मलेशिया 1। 2-1 Chinese Taipei to serve, ball out. Malaysia 2, Chinese Taipei 2. डबल इवेंट ये मैच 2-all की सर्विस वहां पर बेहतरीन तरीके से इसको उठाया, स्मैश करने का प्रयास और हल्के से दिया इसको कोर्ट में और इस प्रकार से ये बॉल बाहर जाता हुआ चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी के द्वारा और मलेशिया को 1 अंक। मलेशिया 3, ताइपे 2। अगला सर्विस चाइनीज ताइपे, अच्छी सर्विस इस बार पैर के सहारे से उठाया, इसको अपने साथी खिलाड़ी को पास किया और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पॉइंट अर्जित किया है वहाँ पर मलेशिया। इस प्रकार मलेशिया का अंक 4, चाइनीज ताइपे 2 पर। इसमें सर्विस ऑल्टरनेट होता है, पहला सर्विस जो करेगा दूसरा सर्विस उसका साथी खिलाड़ी करेगा। मलेशिया की सर्विस इस बार नेट पर मार दिया है मलेशिया के खिलाड़ी ने। इस प्रकार से ताइपे को 1 अंक। ताइपे 3, मलेशिया 4। चाइनीज ताइपे सर्विस करने के प्रयास में और बॉल बाहर मार दिया है इस सर्विस को बेस लाइन से बाहर और इस प्रकार से मलेशिया को 1 अंक। मलेशिया 5, चाइनीज ताइपे और मलेशिया के बीच ये चलता हुआ ये मैच। ताइपे 3, मलेशिया 5। अच्छी सर्विस यहाँ पर मलेशिया ने इस सर्विस पर 6 अंक प्राप्त किया। चाइनीज ताइपे सर्विस जर्सी नंबर 4 बहुत बेहतरीन तरीके से खेला था मगर सीधा नेट पर आकर के बॉल लगी और इस प्रकार से मलेशिया को 1 पॉइंट। मलेशिया 7, चाइनीज ताइपे 3। मलेशिया क्योंकि इस डबल्स में हमेशा अल्टरनेट सर्विस होता है, अच्छी सर्विस वहाँ पर उठाया है, बॉल को स्मैश किया और एक बार फिर उसको लिया मलेशियन खिलाड़ी ने और बहुत बेहतरीन तरीके से खेला इसको मलेशिया के खिलाड़ी ने और इस प्रकार से 8 अंक पर पहुंचा मलेशिया। बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेसमेंट किया था वहां पर बिल्कुल खाली स्थान पर। चाइनीज ताइपे जर्सी नंबर 3 उनकी सर्विस, अच्छा सर्विस किया है मगर सीधे मलेशिया खिलाड़ी और बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है इसको, बहुत ही सुंदर तरीके से मलेशियन खिलाड़ी और इस प्रकार से अंक प्राप्त किया। मलेशिया 9 अंक पर पहुंचा। पहला मैच डबल्स का मेंस सेक्शन में ताइपे 3, मलेशिया की सर्विस। मलेशिया 9 पॉइंट पर खेलता हुआ चाइनीज ताइपे ने 3 अंक प्राप्त किए हैं और इस बार भी बहुत बेहतरीन तरीके से मलेशिया का सर्विस और 10 अंक पर पहुंचा मलेशिया। चाइनीज ताइपे अभी भी 3 पर रुकी हुई है, 3 अंक उनको मिला है जबकि मलेशिया ने 10 अंक प्राप्त किए हैं। पहला सेट इस वक्त जारी है। चाइनीज ताइपे की सर्विस मगर सीधे नेट पर और इस प्रकार से 1 अंक और मलेशिया को प्राप्त। मलेशिया 11, चाइनीज ताइपे 3। मलेशिया की सर्विस, मलेशिया के खिलाड़ी जर्सी नंबर 3 सर्विस करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से सर्विस किया था, इस बार भी पॉइंट मलेशिया के हक में। मलेशिया 12 इस अंक के साथ जबकि चाइनीज ताइपे अभी भी 3 पर। चाइनीज ताइपे सर्विस करने के प्रयास में, जर्सी नंबर 3 बेहतरीन तरीके से किया था सर्विस, उसको सैर के सहारे से लिया और बहुत बढ़िया वहां पर ब्लॉक किया मगर बॉल बाहर साइड लाइन से जाती हुई मलेशिया को 1 अंक और 13 अंक पर पहुंचा मलेशिया।
देखिए ब्लॉक किया वहाँ पर ज़रूर, लेकिन बॉल बाहर चली गई। चाइनीज ताइपे अभी भी 3 पर अटका हुआ। मलेशिया की सर्विस 13 मलेशिया 3 ताइपे। अच्छी सर्विस, मगर इस बार सर्विस बाहर मार दिया है मलेशिया के खिलाड़ी ने। चाइनीज ताइपे को 1 अंक और। बहुत देर के बाद मलेशिया चाइनीज ताइपे का ये अंक। मलेशिया बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करता हुआ। चाइनीज ताइपे का सर्विस, मलेशिया खिलाड़ी ने इसको उठाया, पास ऑन किया अपने खिलाड़ी को और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हेड के सहारे से खेला है और चाइनीज ताइपे यहाँ पर 1 अंक प्राप्त करता हुआ। चाइनीज ताइपे 5 मलेशिया 13। 2 अंक मलेशिया दूर है इस पहले सेट से। मलेशिया की सर्विस जर्सी नंबर 3। सर्विस इस बार मलेशिया की सर्विस सीधे नेट पर। ताइपे को 1 अंक। में 2 ही खिलाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से गेंद को देखना पड़ता है और यहाँ पर चाइनीज ताइपे का सर्विस बाहर जाता हुआ। मलेशिया 14, 1 अंक दूर अब पहले सेट से, जबकि चाइनीज ताइपे ने सिर्फ 6 अंक प्राप्त किए हैं। टाइम आउट। ISTAF सेपैक्टाक्रो वर्ल्ड कप 2025 डबल्स के इवेंट इस वक्त यहाँ पर चलता हुआ। मलेशिया और चाइनीज ताइपे के बीच ये कोर्ट नंबर 1 पर। मलेशिया 14 अंक पर, जबकि ताइपे ने 6 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया है चाइनीज ताइपे ने, तो 3 नंबर जर्सी का खिलाड़ी बाहर। मलेशिया की सर्विस की एडवांटेज आया कि मलेशिया को प्राप्त होती है या नहीं, ये देखना है। अगर इस पॉइंट को अर्जित किया तो सीधे सेट तो वो जीत जाएंगे। मलेशिया 14, ताइपे 6। मलेशिया की सर्विस बेहतरीन तरीके से सर्विस किया, वहां पर सीधे उठाया इस बॉल को और स्मैश करने का प्रयास, मगर सीधे नेट पर। और इस प्रकार से मलेशिया ने ये सेट 15-6 से जीत लिया है। पहला सेट। ISTAF सेपैक्टाक्रो वर्ल्ड कप 2025 पाटलिपुत्र स्टेडियम पटना बिहार। आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन। डबल्स के टूर्नामेंट यहाँ आज शुरू किए गए हैं। पहला मैच मलेशिया 1 सेट से आगे। मलेशिया 1, चाइनीज ताइपे 0। दूसरा सेट अब से कुछ ही समय में यहाँ खेला जाएगा, मलेशिया और चाइनीज ताइपे के बीच। चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी आज कुछ अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ नहीं कर पाए अपने पहले मैच में, जबकि मलेशिया बिल्कुल हावी रहा है ये पहले सेट में। और कोई भी मौका मलेशिया के खिलाड़ी अपने हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। जहां भी उनको ऐसा लगता है कि इस पर पॉइंट आएगा, वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि पॉइंट को अर्जित किया जाए। अब दूसरा सेट कुछ ही क्षणों में। मलेशिया
leading by 1-0. सेकंड सेट अब से कुछ ही समय में यहाँ ये 2 मिनट का समय रहता है पहला सेट और दूसरे सेट का अंतर शुरू करने के लिए यहाँ पर अपने कोच के साथ कुछ बातें करते हुए मलेशिया के खिलाड़ी जर्सी नंबर 3 और जर्सी नंबर 17। यहाँ पर चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी भी अपने कोच के पास खड़े होकर कुछ इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं उनसे। पहला सेट बड़ी आसानी से मलेशिया ने जीता है 1-0 की बढ़त बनाए हुए चाइनीज ताइपे के विरुद्ध। खिलाड़ी तैयार होते हुए दूसरे सेट के शुरू करने के प्रयास में। Taipei 15-6 से मलेशिया ने पहला सेट को जीता है, जबकि दूसरा सेट चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी के पास सर्विस करने का मौका। पहले सर्विस जर्सी नंबर 6, अच्छी सर्विस वहां पर, मगर उतनी बेहतरीन तरीके से इस बॉल को उठाया। बहुत बढ़िया स्मैश वहां पर मलेशिया के खिलाड़ी के द्वारा, बिल्कुल खाली स्थान पर उन्होंने ये बॉल को प्लेस किया और 1 अंक अर्जित किया। दूसरे सेट में पहला अंक मलेशिया के लिए। फर्स्ट पॉइंट goes to Malaysia in the second set. मलेशिया 1 ताइपे 0। मलेशिया की सर्विस, मगर इस बार मलेशिया के खिलाड़ी ने इसे बाहर मार दिया और इस प्रकार से ताइपे को 1 अंक प्राप्त। 1-1 की दोनों टीम बराबरी पे। पहला सेट तो वैसे ही मलेशिया ने जीत लिया है, दूसरे सेट में 1-1 की अंक दोनों टीम को। चाइनीज ताइपे जर्सी नंबर 4 सर्विस करेंगे। यहाँ पर अल्टरनेट सर्विस तो होता है डबल्स में। पहला सर्विस जो खिलाड़ी करे, और बहुत बेहतरीन शॉट यहाँ पर मलेशिया का, और मलेशिया इस सर्विस को बहुत आसानी से वहाँ पर प्लेसमेंट किया, खाली स्थान पर 1 पॉइंट और अर्जित किया। मलेशिया 2 चाइनीज ताइपे 1। अब जर्सी नंबर 3 सर्विस करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट सर्विस यहाँ पर हर पॉइंट पर बेहतरीन सर्विस, और इस बार खाया अपने शरीर को यूज करके और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर इसको प्लेस किया मलेशिया खिलाड़ी ने। मलेशिया का अंक बढ़ता हुआ, मलेशिया 3 ताइपे 1। दूसरा सेट मेंस डबल का अच्छी सर्विस वहां पर, इस बार भी स्मैश किया था और मलेशिया के खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पर मलेशिया बहुत आसानी से प्लेसमेंट करते हुए के शरीर में लग के चाइनीज ताइपे के बॉल इसी पर उन्हीं के कोर्ट पर रहा। इस तरह से मलेशिया को 1 अंक प्राप्त और 4 पर पहुंचा मलेशिया, जबकि चाइनीज ताइपे का पॉइंट 1। मलेशिया की सर्विस, अच्छी सर्विस वहां पर अपने सर के सहारे से लिया, इसको स्मैश करने का प्रयास, मगर स्मैश नहीं किया वहां पर, वो बॉल को बहुत ऊपर मार दिया और कोर्ट से बाहर, और इस तरह से 1 अंक और प्राप्त हुआ मलेशिया को। मलेशिया 5 चाइनीज ताइपे 1। चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी आज कुछ अच्छे खेल का प्रदर्शन तक नहीं कर पाए हैं। देखना है कि आगे चलकर क्या करते हैं। चाइनीज ताइपे का सर्विस, अगर चूंकि सर्विस ऑल्टरनेट होता है, पहला सर्विस जर्सी नंबर 6 ने किया था, अब उनको उस स्थान से दूसरा खिलाड़ी जो जर्सी नंबर 4 है उसको दिया गया सर्विस करने के लिए, और इस तरह से मलेशिया को 1 अंक और प्राप्त, क्योंकि नेट पर बॉल मार दिया था ताइपे के खिलाड़ी ने। मलेशिया का सर्विस 6-1 की बढ़त बनाए हुए मलेशिया, अच्छी सर्विस वहां पर उठाया था इस बॉल को, और अच्छा ब्लॉकिंग करने का प्रयास जरूर किया था वहां पर, मगर बॉल बेस लाइन से बाहर जाता हुआ मलेशिया के, और इस प्रकार से चाइनीज ताइपे को 1 अंक निश्चित रूप से यहां पर प्राप्त हुआ है।
चाइनीज ताइपे 2, मलेशिया 6। अच्छी सर्विस वहाँ पर, और इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर प्लेस किया। चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी इसको सही तरीके से ले नहीं पाए। मलेशिया का अंक बढ़ता हुआ 7। डबल्स में हमेशा ऑल्टरनेट सर्विस होता है, जो पहला सर्विस जो करेगा उसका दूसरा साथी वाला खिलाड़ी दूसरा सर्विस करेगा। अब जर्सी नंबर 17 मलेशिया के खिलाड़ी, इसको सर्विस उनके पास, कप्तान है। अच्छी सर्विस वहाँ पर, सीधा उठाया बॉल को, हल्के से अपने सर के सहारे से नेट पे दिया था, और इस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मलेशिया के खिलाड़ियों ने इसको प्लेस किया। और देखिए कितना बढ़िया स्मैश वहाँ पर, बिल्कुल कोई मौका नहीं ब्लॉक करने के, तो गए थे ज़रूर लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं। और इस प्रकार से मलेशिया 8, चाइनीज ताइपे 2। पहला सेट हार चुकी है ताइपे 15-6 से। अब मलेशिया का अंक 9 हो गया है, जबकि चाइनीज ताइपे अभी भी 2 अंक पर हैं। जर्सी नंबर 3 मलेशिया के पास सर्विस, मलेशिया 9, चाइनीज ताइपे 2, और नेट पर मार दिया है। इस प्रकार से चाइनीज ताइपे का अंक बढ़कर 2 से 3, मलेशिया 9, ताइपे 3। चाइनीज ताइपे और मलेशिया का भी चलता हुआ डबल्स का ये पहला मैच पुरुष के विभाग में ISTAF सेपकटाक्रो वर्ल्ड कप 2025। चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी से कुछ बातें करते हुए, क्योंकि पहला सर्विस उन्होंने किया था, बाद में जर्सी नंबर 4 के पास सर्विस आया, क्योंकि ऑल्टरनेट सर्विस है, मगर वहाँ पर शायद अंपायर से कोई चूक हो गई थी। जर्सी नंबर 6 ही सर्विस करेंगे, और देखना ये है कि अब चाइनीज ताइपे इस सर्विस पर क्या प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी सर्विस वहाँ पर, और स्मैश करने का प्रयास, मगर इस बार चाइनीज ताइपे ने काफ़ी खुला स्थान छोड़ रखा था और बिल्कुल जाने दिया बॉल को बेस लाइन से बाहर। 4 अंक पर पहुंचा ताइपे। मलेशिया के पास सर्विस का मौका, 17 नंबर जर्सी किया है इस सर्विस को मलेशियन खिलाड़ी ने। 5 पर पहुंचा ताइपे। अब 5-9 ये पहला सर्विस 17 नंबर की जर्सी ने किया था, अब दूसरा सर्विस उनके साथी खिलाड़ी ने किया है। इस बार भी बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है, बहुत बेहतरीन स्मैश का यहाँ पर नमूना पेश करते हुए मलेशियन खिलाड़ी। देखिए किस कदर इतने एजाइल हैं, कितने फुर्तीले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अपने हाइट का और अपने इसका यूज़ किया उन्होंने। बहुत बेहतरीन तरीके से खेला। 10 अंक पर मलेशिया, टाइम आउट दिया गया है। 10 मलेशिया 10, ताइपे 5। क्योंकि टाइम आउट है, हमारे पास कुछ बोलने का मौका। मलेशिया चाइनीज ताइपे के बीच डबल्स मेंस का ये पहला मुकाबला चलता हुआ कोर्ट नंबर 1 पर। मलेशिया ने पहला सेट 15-6 से जीता है ताइपे के विरुद्ध, जबकि दूसरे सेट में 10-5 की बढ़त बनाए हुए मलेशिया 1-0 सेट से आगे मलेशिया चलता हुआ। ISTAF Sepaktakraw World Cup 2025 here at Patliputra Stadium, Patna, Bihar. This time हमारे पास अब मलेशिया खिलाड़ी के हाथ में बॉल है। मलेशिया के खिलाड़ी सर्विस करेंगे। अच्छी सर्विस वहाँ पर, मगर इस बार क्योंकि बॉल को लेने का प्रयास जरूर किया था, मगर ठीक तरीके से ले नहीं पाए। बॉल साइड लाइन से बाहर, और 11 पॉइंट पर पहुँच गया मलेशिया, जबकि 5 पर अभी भी बनी हुई है चाइनीज ताइपे।
चाइनीज ताइपे के पास सर्विस करने का मौका। सर्विस किया उन्होंने और इस बार भी नेट पर मार दिया जर्सी नंबर 6 और मलेशिया को एक और अंक प्राप्त। इस तरह से 12 अंक पर मलेशिया और 5 पर चाइनीज ताइपे। मलेशिया के हाथ में सर्विस। इस बार मलेशिया के खिलाड़ी ने सर्विस नेट पर मारा और इसका फायदा ताइपे को हुआ। ताइपे का एक अंक प्राप्त। 6 पर पहुंचा ताइपे। मलेशिया चाइनीज ताइपे के बीच ये मैच अच्छी इस बार भी चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी ने नेट पर दे मारा बॉल को और मलेशिया को एक अंक और प्राप्त। मलेशिया 13 चाइनीज ताइपे 6। मलेशिया की सर्विस। इस बार मलेशियन खिलाड़ी ने चाइनीज ताइपे को सर्विस जो किया था वो नेट पर मार दिया। इस तरह से एक अंक और प्राप्त चाइनीज ताइपे को। चाइनीज ताइपे इस पॉइंट की सहायता से 7 पर पहुंचा जबकि 13 पॉइंट पर खेल रहा है मलेशिया। ये जर्सी नंबर 17 सर्विस करेंगे। ऑल्टरनेट सर्विस डबल्स में हमेशा अच्छी सर्विस वहां पर चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी ने लिया और बाहर जाती हुई गेंद को फिर वापस लाया ग्राउंड पे। और इस बार देखना यह है कि और यहाँ पर चूक हुई। चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी से स्मैश करने का प्रयास जरूर किया था और इस तरह से 15 अंक पर पहुंच गया मलेशिया। ये दूसरा सेट 15-7 से उन्होंने जीता। स्ट्रेट 2 सेट 15-6 और 15-7 से मलेशिया ने इस सेट को इस मैच को जीत लिया है। आज का ये पहला मैच मलेशिया और चाइनीज ताइपे के बीच खेला गया कोर्ट नंबर 1 पर। मलेशिया 2 चाइनीज ताइपे 0। Team by Malaysia 2-0. Second, please. मलेशिया और चाइनीज ताइपे का फाइनल रिजल्ट 2-0 से मलेशिया
अगला मैच इटली म्यांमार के बीच खेला जाएगा। मैच नंबर 4 मेंस डबल इवेंट। ISTAF वर्ल्ड कप Sepaktakraw 2025। आज का दूसरा मैच कोर्ट नंबर 1 पर इटली और म्यांमार के बीच खेला जाएगा, जो कि मैच नंबर 4 मेंस डबल इवेंट का। Italy starting lineup: Arovetto Lombardi, Captain Johnny Lombardi. Substitutes: Mario Altavilla. Please welcome Team Myanmar. Myanmar lineup starting: Xian Yuan Zhao, Aung Meo Kiao, Captain. Substitute: Zhao Min Kant. Line. दूसरा मैच इटली और म्यांमार के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीम कोर्ट पर आ चुकी है। ISTAF Sepaktakraw World Cup 2025। Good morning, ladies and gentlemen. Welcome इटली to all ISTAF और World म्यांमार Cup के बीच। Sepaktakraw 2025 Bihar, इटली India. के कप्तान Double event match number 4. On my right, Italy. On my right, Myanmar. Players 8. इटली So, के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी इस वक्त डबल्स में। टू सर्व फर्स्ट। love on, play. सर्विस को बाहर मार दिया और इस प्रकार से आउट बॉल। One, love. अच्छी सर्विस वहां पर इटली और म्यांमार के बीच ये मैच। Number 2. Yeah. Alternate. डबल इवेंट का ये इटली और म्यांमार के बीच। इटली की सर्विस, म्यांमार एक, और बेहतरीन तरीके से इसको खेल दिया म्यांमार के खिलाड़ी ने और अपने
अंक प्राप्त किया वहां पर 3, love. म्यांमार। अच्छी सर्विस, नेट पर मार दिया इस बार बॉल को म्यांमार के खिलाड़ी ने। और इटली के पास सर्विस, म्यांमार 4 अंक, इटली अभी तक अपने अंक कोई नहीं बनाए हैं। 1, 3. इटली की सर्विस, अच्छा सर्विस वहां पर म्यांमार के खिलाड़ी ने से लिया, स्मैश करने का प्रयास और बहुत बेहतरीन तरीके से स्मैश किया वहां पर म्यांमार के खिलाड़ी ने। और इटली को 1 पॉइंट जरूर मिला, लेकिन वहां पर चूंकि नीचे से सर्विस उनका गया था नेट के, और इस प्रकार से इटली को 1 पॉइंट। अच्छी सर्विस यहाँ पर म्यांमार के, मगर इस बार कोई गलती नहीं म्यांमार के खिलाड़ी के द्वारा। 5 पर पहुंचा म्यांमार, इटली 1। इटली की सर्विस, अच्छा सर्विस अपने साथी खिलाड़ी को दिया, स्मैश करने का प्रयास, बहुत बेहतरीन तरीके से जंप किया और स्मैश किया और 6 अंक प्राप्त किया म्यांमार ने। इटली अभी तक 1 ही पॉइंट पर है। अच्छी, और इस बार म्यांमार के खिलाड़ी ने सीधे नेट पर मारा और इटली को 1 पॉइंट, जबकि इटली की सर्विस, इटली 2 म्यांमार 6। अच्छा सर्विस वहां पर किया, इसको उठाया, अपने साथी खिलाड़ी को पास किया, मगर इस बार म्यांमार के खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको खेला और 7वां पॉइंट अर्जित किया म्यांमार ने। 7, 2. म्यांमार की सर्विस, इसे अपने चेस्ट के जरिए से लिया और बहुत बेहतरीन तरीके से हेड किया था वहां पर अपने हाइट का फायदा उठाते हुए, मगर म्यांमार के खिलाड़ी भी उतनी ही चुस्त और नजर आते हुए 8 पॉइंट पर पहुंचा म्यांमार, जबकि 2 पॉइंट बनाकर इटली खेलता हुआ। इटली सर्विस, उनके जर्सी नंबर 2 सर्विस करेंगे, इटली 2 म्यांमार 8। बहुत बेहतरीन तरीके से खेल दिया है इस बॉल को और बहुत अच्छा खाली स्थान पर इसको स्मैश किया, वहां पर 9 पॉइंट पर पहुंचे म्यांमार। इस कदर बेहतरीन तरीके से जंप किया और अपने पाइक के सहारे से इसको खेल दिया। अब 9 म्यांमार का सर्विस, अच्छी सर्विस इस बार इटली के खिलाड़ी इसे अपने मारा, लेकिन क्या हो गया कि उनका बॉल जो है बाहर साइड लाइन से जाता हुआ 10 पर पहुंचा इस पॉइंट के सहारे से म्यांमार। इटली 2, इटली की सर्विस, अच्छी सर्विस वहां पर किया है, साथी खिलाड़ी को पास ऑन किया और बहुत बेहतरीन तरीके से स्मैश किया म्यांमार के खिलाड़ी ने। 11 म्यांमार 11, इटली 2। इटली के खिलाड़ी इतने अच्छे खेल का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और इस बार भी उन्होंने बाहर मारा। इटली के खिलाड़ी बिल्कुल फुटबॉल खेलने के अंदाज में सेपकटाक्रो खेलते हुए। म्यांमार 12, इटली 2। इटली की सर्विस, जर्सी नंबर, क्योंकि अल्टरनेट सर्विस इस डबल्स में हमेशा किया जाता है और जो सर्विस एक खिलाड़ी पहले करेगा दूसरा खिलाड़ी बाद वाला सर्विस उसको मिलेगी। इस तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से इसको निकाल दिया और म्यांमार, इटली की सर्विस, म्यांमार 12, इटली 2। बहुत अच्छी सर्विस वहां पर की, मगर म्यांमार के खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन तरीके से खेला इसको और 1 अंक और प्राप्त किया वहां पर म्यांमार ने। म्यांमार इस अंक की सहायता से 13 पर पहुंचा, 2 पॉइंट दूर इस पहले सेट से। म्यांमार की सर्विस, अच्छी सर्विस वहां पर उठाया और यहां पर देखना ये है कि नेट का सहायता जरूर किया था वहां पर, मगर पॉइंट म्यांमार को, चूंकि नेट पर उनका पैर आकर लग गया और 14 पर पहुंचा, सिर्फ 1 अंक दूर पहले सेट से म्यांमार। 14, इटली 2। इटली की सर्विस, इटली
पहला मैच खेलते हुए म्यांमार के विरुद्ध बेहतरीन तरीके से खेला इसको म्यांमार के खिलाड़ी ने, और इस प्रकार से 15 अंक प्राप्त करने के बाद पहला सेट उन्होंने 15-2 की अंतर से जीता, और ये सेट बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है। 15 म्यांमार, 2 इटली। म्यांमार ने पहला सेट बड़ी आसानी से जीता है। First set, won by Myanmar, 15-2, 2-minute rest. दूसरा सेट इस वक्त शुरू, वहाँ पर इटली और म्यांमार के बीच। पहला सेट म्यांमार ने 15-2 से जीता था। म्यांमार को पहला अंक प्राप्त। इटली की सर्विस। कुछ समय के लिए बस सब्स्टिट्यूशन किया गया है। दूसरा सेट म्यांमार और इटली के बीच डबल्स का। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी नंबर 3 इन, नंबर 7 आउट। सर्विस वहाँ पर इस बार बेहतरीन तरीके से खेला और स्मैश किया बॉल को। जिस प्रकार से वो जंप लिए थे, निश्चित रूप से ये लग रहा था कि वो अच्छा स्मैश करेंगे। खाली स्थान पर उन्होंने किया और 1 अंक प्राप्त किया उन्होंने। ले नहीं पाए इटली के खिलाड़ी। 2 म्यांमार, 0 इटली। सर्विस म्यांमार की। पूरा टच, तीसरे टच में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से खेला, स्मैश किया, और यहाँ पर इटली के पास कोई मौका नहीं बॉल के नज़दीक भी जाने का। म्यांमार 3, इटली 0। इस अंक के साथ म्यांमार 4 पर पहुंचा, जबकि इटली अभी भी 0 पर बरकरार। अच्छी सर्विस वहां पर, एक बार सर्विस को उठा ही नहीं पाए।
बहुत अरोवेटो 1 नंबर जर्सी सर्विस करेंगे इटली के। सर्विस और एक बार फिर अरोवेटो से बॉल बाहर। इटली के खिलाड़ी बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहे हैं। और अच्छी सर्विस वहाँ पर, अच्छी प्लेस किया था वहाँ खाली लैंड पर, और 7 पॉइंट पर इस बार म्यांमार बहुत बेहतरीन तरीके से एक साइड पे उन्होंने गेंद को प्लस, बॉल को प्लस किया और 7वां पॉइंट अर्जित किया म्यांमार ने। 8वां पॉइंट अर्जित किया, क्षमा कीजिएगा। और इस बार बहुत बेहतरीन सर्विस, इस बार भी उठा नहीं पाए इटली के खिलाड़ी, बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहे हैं। 9 पॉइंट पर पहुंचा म्यांमार, अभी भी 0 पर बना हुआ इटली। आज का दूसरा मैच डबल्स इवेंट का मेंस, और इस बार भी बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है, बिल्कुल सूझबूझ का परिचय देते हुए म्यांमार के खिलाड़ी। 10 पॉइंट पर म्यांमार, अभी 0 पर ही इटली, इनको अभी भी अंक प्राप्त नहीं हो पाई है। सर्विस इस बार अच्छे हेड के सहारे से खेला था इटली के खिलाड़ी ने, और बेहतरीन शॉट वहां पर म्यांमार का 11 पर पहुंचा दिया अपने टीम के पॉइंट्स को। म्यांमार के खिलाड़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि इटली थोड़ी सी कमज़ोर टीम नज़र आ रही है, मगर इस बार इटली को 1 पॉइंट आया। म्यांमार 11, इटली 1। म्यांमार सर्विस नेट पर मार दिया वहां पर म्यांमार के खिलाड़ी, और 2 पॉइंट इस बीच इटली को, दूसरा अंक प्राप्त। म्यांमार 11, इटली 2 मैच किया वहां पर, मगर इस बार भी जो उठाया था इटली के खिलाड़ी वो साइड लाइन से बाहर बॉल। इस प्रकार से म्यांमार को 12 अंक प्राप्त, जबकि 2 अभी भी इटली के। अच्छी सर्विस वहां पर चेस्ट के सहारे से लिया इसको और वापस किया म्यांमार के कोर्ट में, मगर म्यांमार ने इस बार थोड़ी सी उनसे गलती हुई। तीसरा पॉइंट इटली को। म्यांमार का हेडर जो था वो नेट पर आया। 12 म्यांमार, 3 इटली, 3 इटली के पॉइंट है। अब सर्विस इटली के पास। सर्विस वहां पर इस बार भी बहुत बेहतरीन तरीके से खेला, कोई मौका नहीं इटली के खिलाड़ी के पास इस बॉल को वापस करने का। इस तरह से 13 अंक पर पहुंचा म्यांमार, बार भी बाहर मार दिया। इटली 3, म्यांमार 13। इटली की सर्विस, अब 4 पॉइंट इटली को। और बहुत बेहतरीन तरीके से खेल दिया यहाँ पर म्यांमार के खिलाड़ी। काफ़ी इजी मैच खेल रहे हैं म्यांमार के खिलाड़ी। 14 अंक पर, सिर्फ एक ही अंक दूर दूसरे सेट से। और यहाँ पर मैच आ गया म्यांमार के फेवर में। 15-4 से दूसरा सेट जीता। पहला सेट 15-2 से जीता था म्यांमार ने, दूसरा सेट 15-4 से जीता। अब म्यांमार सीधे 2 सेट 2-0 से इस मैच को जीत लिया है। आज का दूसरा मैच म्यांमार और इटली के बीच समाप्त। Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Sepaktakraw World Cup 2025, Bihar, India. Match number 6 for football.
Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
are Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
are Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
are Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
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 Hello and welcome to the Paliputra Indoor Stadium. It's match day 3 here at the Sepaktakraw World Cup 2025, organised by ISTAF, the International Sepaktakraw Federation. Poland versus India, and we are into the men's double event. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to ISTAF Sepaktakraw World Cup 2025, Bihar, India. Match number 7 on court number 1, men's double between Poland versus India. Presenting to you, Team Poland. Poland, how about that? Come all the way from Central Europe. Not the kind of team you would be expecting to have here, but this is a World Cup. This is truly a global event, and we've got Poland taking part in the doubles. Michal Klimczak and Jadislav Jareba are their two players. Michal Rog on the bench. Let's put our hands together for Team India. These are the ones that the fans have come to see. India already with a couple of bronze medals to their name, because we've had the quadrant event already, which is 4-a-side. Here we're into the doubles 2-a-side, but it's familiar players that you would have seen already if you've been watching the quadrant. Ashish and Malin Gamba with Akash on the bench. The players shake hands with one another. Poland officially have Michal Rog on the bench, but I don't think he's been able to make the journey over. So it's just the two of them. You have to hope, cross our fingers, that there are no injuries for Poland. India obviously have an embarrassment of riches. This is half of the quadrant squad that took bronze medal yesterday. The first 2 days of this World Cup were taken up with the quadrant events 4-a-side. Now we're going to move on to the doubles 2-a-side, and after that we will have the mixed quadrants and then the regu, the traditional 3-a-side version of Sepaktakraw. Malin Gamba, the captain. Already with a bronze medal to his name. He featured heavily in that quadrant event. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to As you can see from the screen, my name is Drew Lilly. I'll be bringing you the action all morning here on day 3 from Patna Match number 7 in northeastern India. We're not too far away from places like the Nepal event. Border, the match between Bangladesh border as well. Over in the right, east, Poland, we've had and a on World my Cup left, India. 8 years ago in the west of the country in Hyderabad. Earlier than that, a lot earlier, we had an ISTAF Super Series event in New Delhi. That was 12 years ago now. So the Indian Sepaktakraw Federation taking Sepaktakraw all around the country and bringing it to the world. Ready, Wonderful India. to see Love teams all. from Europe, from Poland, and they're getting us underway. India. Saba. Now the unfortunate thing for those of you watching for the first time, just in case, if you serve into the net, you don't get a second service. So it's already 1-0 as far as India are concerned. Point. Poland. First point to Poland though. Nice little tap over the net there
Point India. Nice save set and then spike at the net by Ashish. 2. The rules 1. are you alternate service. Point Wonderful service India. there by Ashish. A lot of spin on it. Very difficult for Klimchak to try to corral there. So 1, everybody, 3. it's alternating both Team A and Team B, and then player A and player B. So all 4 players Point serve India. 1, 2, 3, 4, much along the lines of doubles tennis. Nice camera work 1. there to show you the roll spike as poor old Zareba flinches at the net. India. It's best of 3 sets and first of 15, so India already racing through this one. 1, 5. A save in the set by Malangamba, Point. and it was nicely Holland. done. It was a wonderful set. You obviously want to be setting the ball as near as possible to the net. Not too close, obviously. You don't want to get it over the net with the set, but look at the height 5, there 2. where Ashish went to take it. It ended up going over the net of its own accord. Point Poland. Bit of luck there for Poland, and I think nobody will begrudge them that. Klimchak setting that one up for himself, putting it too close to the net, but it ended up 3, clipping 5. the tape and going over. So they're keeping pace at the moment. Only 3-5 Point down, make that 3-6 India. as Klimchak sends a service long. Very difficult, obviously, in 6, doubles. 3. You were watching the quadrant the last couple of days. You've got 4 people occupying Point the court. India. Here, you've just got the 2 players trying to cover the entire court. 3, 7. A very tiring version of the sport. Point Excellent attempted block by India. Klimchak, but it ends up going wide. Eight, 3. Point India. That's the kind of spike at the net, a beautiful roll spike Server. that the crowd like to see. Coach Hemraj there on the left. 3, He's been around 9. for decades. Sepaktakraw is a sport that's been played for a good number of decades in Point India. And you've got India. Coach Hemraj Dira, and then the president of the Indian Sepaktakraw Federation, Yogender Singh Dahiya, who've 10, been instrumental in the 3. growth of the sport that's been picked up. It's gone up the categories. You have various categories of sport in Point India, and once you get up to India. a certain level, Server. which Sepaktakraw did around 2013, 2014, it means 3, it gets more 11. government support. Obviously not the case in Poland, and the likes of Point Katarzyna India. Zareba, the wife of Zdzisław Zareba, the number 2. 12, 3. He's here as the team manager, and for a lot of teams on limited budgets, it's a case of who can afford the time off work, who can afford to come over. The Indian Sepaktakraw Federation Point has, of India. course, paid for all of the flights and accommodation of the teams coming from outside of Asia, provided them with kit. As you can 13, see, Poland 3. playing in a red shirts with Bihar on the front, which is the province that we're in at the moment, and the Bihar Sports Point Federation has been India. very generous in their support as well. Well, it was 5-3 at one point. Poland really keeping pace, Which number? and then India have raced away with it, and now they have 11 set points 19. already. 3, game point 14. The save, the set, the Point spike just about India. creeps over, and Players that's the first set in the baseline. in the bag in a matter of minutes for India. Change side. Teams from all around the world here. We have 20 nations competing. Likes of Iran, the Islamic Republic of Iran, whom we saw in the crowd there. Some of their female players. We saw
Poland's female team as well. First set, India Poland win are in the women's 15-3, doubles. 2-minute rest. In a group with Iran, Poland and Myanmar in Group A, France, Japan, India in Group B. In the men's doubles, we're currently watching action from Group A, India and Poland, and they're joined by Chinese Taipei, Vietnam and Malaysia in Group A. Group B, Thailand, Italy, Myanmar, Indonesia, Switzerland. So in the men's, 10 teams, 2 groups of 5, and it's round robin, so everyone plays everyone else in the groups. The top 2 go through to the semi-finals. Winners of Group A play the second place team from Group B, and then vice versa. Semi-final losers get a bronze medal, and semi-final winners obviously go through to the gold medal match. Katarzyna Jareba with a big smile on her face, encouraging her husband and his teammate. All the flags going past in the background, the likes of Sri Lanka, Switzerland, Thailand, USA, Vietnam. Then we start the alphabet again with Brazil. And we move on to Chinese Taipei, France, India. Indonesia, Iran after that. 2-minute break in between sets. So a little bit of a breather, not so much for India. But Poland given the run around. Time's up. Players, ready? It's only the second time Second that set, we've had India doubles to serve. at a World Cup. It's the 5th World Cup organised by ISTAF. The first was in 2011 in Kuala Lumpur, where it was just men's and women's regu. Same again in Ready, 2017 Poland. in Hyderabad, and then in 2022 in Daejeon in South Korea. Men's and women's regu, and there were 2 divisions of the men's Point regu. India. Women's quadrant, men's quadrant, again with 2 divisions, and then a mixed quadrant event. And this is the first time, that we had doubles was last year at the Titiwangsa Stadium in 2024 Point in Poland. Kuala Lumpur. Only men playing that time around. Men's doubles in 2 divisions, men's regu in 2 divisions, and a men's team regu event. So this is the biggest World Cup we've had. Men's and women's quadrant, men's and women's doubles, men's and women's regu, and also a mixed quadrant event. 7 different categories. The biggest and best World Cup that we've had so far. 1, 2. Beautiful camera work, slow motion showing the roll spike and the attempted block. Point India. Zareba sends that one just long. You're always damned if you do, damned if you don't on service. 3, 1. You can't just lob it up there and have your opponent save, set and spike. Point India. Tough one there for Klimchak. That's the art of a good service. For a great service 1, from Malangamba, a lot of 4. spin on it. Point India. Not got a lot of spin or guile on their services, the Poles. So they're just trying to set it as deep as possible. 5, 1. Ashish now serving. Nicely low over the net there by Klimchak. And the 2 of them went up there to block and I think ended up putting off Ashish. He missed that one, so we'll just watch that one again. Failed to connect very close to it. I think if we'd have had Snicko there, you would have seen that he did just about touch it, but not enough. Another point for the Poles. Point India. Ah, shame there for Klimchak. Close to the block. 6, 2. Point Excellent India. effort at saving by Klimchak. Very difficult, particularly when you haven't grown up with the sport.
This lad's grown up with the sport. 2, Akash, 7. been playing for a decade and a half. Still looks young, baby-faced, but he's been honing his craft Out. at the net. Fine. When he plays Regu, then he's purely a killer. One of the spikers at the net. When he plays Quadrant, he quite often 7, takes on the Tekong 3. duties. So goes back behind the line to serve. That one called just out. Out. You've got various Point Poland. officials all around. You can see them there in their black suits, and then the official there. Ready? Afterwards, he lifted up his hands to say out. 2. Palms flat means in. So we've got 2 4. line judges 7. on either side doing the sidelines and the baselines. Then you have the official referee, judge to your left of the screen there, Point. who India. adjudicates as to whether anyone Server. leant over the net to play a shot or touched the net in the act of playing a shot. Then you have a 8. table judge keeping tally of the scores, any timeouts that have been taken and substitutions. Point Poland. It's over. A reminder, best of 3 sets and first of 15, so India just 7 points away from getting 5, their first 2 8. points in this group. And a reminder that only the top 2 will qualify. Point For India. those semi-finals, India will be eyeing off matches against Malaysia and Vietnam. Those are the crucial ones that they're going to have to win. This is 9. more or 5. less a training run for the Indians. Point Poland, it's a India. case of not winning the match, but winning your development. Great to see them on this, the biggest of stages. They'll have taken part in European 5, events. 10. They have Euros every so often, and there are tournaments arranged. There's a Swiss Open, German Open, a French Open as well, and a lot Point of those Poland. events are held quite close together around the east of Switzerland, the Ready? north of Switzerland, the east of France, and the west of Germany, 10. where 6. a lot of clubs are quite close together. You have clubs in Point Alsace India. in France, Basel in Switzerland, Cologne in Germany, all not too far away from one another, which means they can play one another. Bit of a 6. bit 11. of a stretch for Poland to come across, but they do. Poland obviously neighbours of Germany to the east. Point India. Germany has its Chickens Cup every year around November, held in Cologne. Ready? Belgium also has 12. 6. Sepaktakraw events. Belgium to the north of Germany and France. Line referee. Out. Point Poland. And to a certain extent, it's almost easier for 7, those teams 12. in Europe to travel to one another's events than it would be for India, Point for example. India. When you consider we've had ISTAF events in Hyderabad, New Delhi, 13. now Patna, 7. all thousands of miles apart. Beautiful Point service India. by Captain Malingamba. Out into the corner, and that sets up 7 match points Match for point the Indians. 14. The save, the set, the smash. Point India. And that is it for Players and India. official, They please have please defeated line. Poland at 15-3, 15-7, straight sets, and that's their first win in Group A. No. Finish. Wait. Final result, India win 2-0. Players and official, please shake hands. Akash didn't need to take his tracksuit top off.
Poland will live to fight another day, and they will be looking at Chinese Taipei to see if they can pick up a win. But they're going to have their work cut out for them against the likes of Malaysia and Vietnam in Group A. Back for more action here at the men's doubles at the ISTAF Sepaktakraw World Cup 2025 in the province of Bihar, in the northeast of India, in the city of Patna.
Myanmar versus Switzerland, Asia versus Europe once again. Yeah. Match number 9 on court number 1, men's double. We have men. Let's welcome Team Myanmar. Myanmar in Group B. 5 teams in Group B. Min Kant and Myo Kiao are the starting players. Wanda Zhao is on the bench. All 3 of those were involved in the quadrant events that was played on day 1 and day 2, where Myanmar picked up a bronze in the men's. Team Switzerland. No posing there from the Swiss. Reto Löhliger just cruises in with a bit of a nervous wave. Followed at a distance by Andreas Hendrick. And as you can see, team manager Hantakorn Löhliger. Hantakorn met Reto about 15 years ago at the King's Cup in Thailand. And their eyes met across a crowded Takraw court. And they got married. Reto, big tall figure, the one on the right. He's been around for many a year. Part of the Sepaktakraw community in Switzerland. 6 officials, as we mentioned earlier. 1 in the chair, 1 on the net. 2 side officials, the sidelines for the baseline and the sidelines. 1 table official to note everything down. And then 1 extra official just to relay anything that needs to go from tournament organisation to the referee and vice versa. Gerhard von Stocker, the coach, and then Hantakorn Löhliger is the team manager. Number 3 for Myanmar, Min Kant. Number 4, Myo Kiao. Reto, that we were seeing there, he's also an ISTAF committee member. There are representatives from all around the world, a number of different countries. We have Hilario Nobrega, Brazil, for example, down in the Americas. Switzerland. On my left is Myanmar. European member in Reto Löhliger. Line referee, assistant referee, Barak line referee. Switzerland to serve, ball to Switzerland. Switzerland didn't have enough players able to come over for them to be part of the quadrant event, so here they are in doubles. Reto Löhliger gets us underway. Ball, point to Myanmar. Net was touched, so the first point goes the way of Myanmar. 1 low. Gerlach there reaching over the net, which you're not allowed to do. Point to Myanmar. Service change. Low 2.
Point to Myanmar. Three love. Point to Myanmar. Four points already for Myanmar. We've gone around the horn. Everybody has served once. Foul. Point to Switzerland. Net touch. Switzerland get their first point. Good for them to get on the board. 4-1. Point to Myanmar. One, 5. Point to Myanmar. Six, 1. Point to Switzerland. Just get the one service in Sepaktakraw in any version of it. So Min Kant puts that one into the net. That gives Switzerland another point. I'll take anything they can get. Beautifully dinked over the top there. They could see Gerlach coming. And that was tapped nicely over the top. Min Kant coming over. 2. Myo Kiao. Gerlach gets it back. The head used. You can use any part of the body except the hands or the arms. Good. Final. Warm greetings to any of you actually watching from Switzerland on the... Oddball. Oh, that one was just called out. I thought that one had clipped the line. So those of you watching on a live stream, just after 10:30 in the morning here. So it's going to be just after 6 in the morning where you are in Switzerland. Oh, fired down the middle by Min Kant. It's the way to do it. In between players, it works in any sport. 2-10. Hit it where the players aren't is the main rule. Point to Myanmar. Almost a sunback spike there from Min Kant. Not much of a spike, but just flicks over the shoulder. The roll spike is the one we see most often in the men's game, 11, where the ball is set up high and the player rolls over, rolls their right foot or their left foot over. A rolling motion to put it away, and then the sunback spike is flicked over the shoulder, the same shoulder that you're using, so right foot over the right shoulder or left foot over the left shoulder, depending on whether you're right or left-footed. Hot ball. Good attempt from Lurliger there, just to try to chip it back. Thirteen, 2. Point to Myanmar. Fired down there, difficult to stop. You may have seen that there is an extra clock by the net, which is behind the net judge. So there to your left, you can see a clock that says 0000. That resets to 15, and you might see it reset. Just panned away from it. As we get to the end of the first set, Myanmar 15-2, they took that one. Myanmar, obviously, with a rich
Sepaktakraw history. On the baseline, players. First set won by Myanmar 15-2. Sepaktakraw called by a number of different names all around the planet. The Sepak is from Bahasa, so the language is used in Malaysia and Indonesia, and Sepak means to kick. Sepak bola football, Sepaktakraw is the version of the sport that we're watching. In Thailand, it's called takraw, because that is the name of the ball that we are using. The ball that used to be woven out of rattan, and now it's made out of plastic. Other names for the sport all around the world. In Myanmar, it's known as chinlon, which literally means cane ball. It's the type of ball that we have, I say, originally made out of rattan or made out of cane in Myanmar. The sport's been played for 1,500 years. As in Switzerland, it's been played for about 15. Probably more than that, actually. It's been played for probably twice as long as that. Ready, please. Online. Switzerland and Myanmar in Group B with Thailand, Italy and Indonesia. So Switzerland will be eyeing their local derby with Italy. Switzerland and Italy separated by the Alps, mountain region. Myanmar. Number? And you've got 7 parts in. of Who's out? Switzerland Who's going out? that speak Italian. These guys are from the German-speaking part, the French-speaking part as well, and another official language called Romansh. So 4 different official languages in Switzerland. Players in. Substitution by Myanmar. 3 out. 7 in. Substitution going to be made by Myanmar. So Min Kant going off, Wanazao coming on. Yeah, Myanmar to serve. Good look at the shoes there. Very flat, thin Low, soles. all. Nothing too elaborate. You just want little canvas Point to Myanmar. shoes as flat as possible. Even the laces as flat as possible as well, and some players play without laces or take the laces out and have very tight Low, shoes. 1. You obviously don't want the ball going off at Point to Myanmar. an unexpected angle due to hitting the laces or hitting a knot where the laces have been tied. 2 low. Point to Switzerland. Zhao comes in. It's always difficult to come into a match cold and then have to serve, but 1, you've obviously got 2. to serve in doubles. Everybody serves 1, 2, 3, 4. Out ball. Called out. Point to Switzerland. So Switzerland find themselves 2-all in this second set. Just 2 points in the whole of the first set. And much along the lines of Quadrant and Regu as well, depending on how good your Tekong is, when you receive the ball on service, Myanmar. you're more likely to score points because you've got the ball in your court to save, set and spike.
Bit of an awkward attempt at a 2-3. sunback spike there from Hendrik Gerlach. Hot ball, point to Then Switzerland. sends a Sorry, service long. Myanmar. Four, 2. Point to Switzerland. Zhao with quite a dynamic service motion, going along the baseline. 3, You don't have to be in a 4. set spot in doubles or quadrant. You just have to be behind the baseline. You can see Lerliger scampering in there, Point to Myanmar. try to defend. Otherwise, those of you watching for the first time, maybe you'll have noticed the circles right there. That's for the Regu version, the 3-a-side 5, version. 3. So the server, or Tekong, stands with the non-kicking leg in the Point to Myanmar. circle, and then swings a foot at a ball that is tossed to him or her from by the 3, net in one of 6. the little arcs that you can see there on either side of the net. A feeder will toss the ball up, Point to and Myanmar. if the ball toss is wrong, it's tough luck. You've got to swing and try to hit it anyway. So the ball toss is an art, as well as swinging the leg. 7-3. Point to Switzerland. Zhao being very generous, giving Switzerland most of their points. 4-7. Lerliger with the service. He's not going to fault on service. He's been serving for decades Out. now. Point to Myanmar. Plenty of muscle memory there for him. Eight, 4. Captain Mio Kiao. In ball. That's a perfect Point service. to Myanmar. And watch that one there. 4, Lerliger 9. watched that one as well. Inside the baseline, inside the sideline. Gerlach with a decent service this time. And a good block. Odd Just ball. goes long. Point Always a to shame when you Myanmar. manage to get in a good block like that and it sails long. You watch it agonizingly float beyond the baseline after you put in that hard work. 10-4. Difficult. You need to have your leg stretched out parallel with the net. Point. How about Point that to from Switzerland. Gerlach though? Nice little sunback spike, right foot over the right shoulder. Yeah, wait. 2 to See serve. that, just flipped over. You He to prefers the sunback spike. More prominent in the women's game. Roll spike more prominent in the men's. 5-10. Good deep service from Lerliger. Point to Myanmar. And then flicked away almost disdainfully by Zhao. Always got a smile on his face, Reto Lerliger. 11. Odd ball. This time Point it's to the captain's Switzerland. turn to miss on service and give Switzerland a point. They all count, you'll take them all. 6-11. Point to Myanmar. Twelve, 6. Point to Switzerland. Seven, 12. The save, the set, Point. the spike. Attempted Point block by to Gerlach. Myanmar. Thirteen, 7. Myanmar, all business. In Oh, ball. how about that one? Point to Myanmar. He was called out by Gerlach.
called in by the judges, and we watched that one. That's a beaut. That's absolutely perfect, and that's the kind of shot you want to play to set up match point. 7 of them. 7. Pressure now on Gerlach. 14. Gets a good service over. Nice little, not too deep, and then can Lurliger keep this alive? He can't. Point to Myanmar. A wry Players smile on to his baseline. face. Myanmar take the chocolates. 15-2, 15-7. All coach managers of both the teams, please, on the baseline. A 2-0 win for Myanmar. First set won by Myanmar. Taking care of business. 15-2. Second set won by Myanmar 15-7. Match game won by Group B, Myanmar 2-0. they've got Thailand, Players, Indonesia official in there handshake. as well as Switzerland and Italy. So this was more or less a warm-up for them. The big matches are going to be against Thailand and in Good game. particular Good Indonesia. game, tough start. That should be a very evenly matched contest, that one. Good game.
Over to the women's side of the doubles now, and it's once again Asia versus Europe. It's Iran versus Poland. Six countries involved in the women's doubles: Iran, Poland and Myanmar in Group A, France, Japan and India in Group B. Iran's women team. Two players, one substitute. Let's welcome Team Poland. And Poland. Oh, Charlie's Angels. Nice little warm-up as the players jog around to court number one. Court number two has got men's action between Malaysia and Vietnam at the moment. The six officials. IR Iran, the Islamic Republic of Iran. They've had a number of men's teams involved in ISTAF competition right from the very beginning, right from the first
ISTAF World Cup in 2011. And it's wonderful to see the women's teams here as well. Iran were involved in the women's quadrant event. Poland here making their debut both in the men's doubles and the women's doubles. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to ISTAF Sepaktakraw World Cup 2025. Match play between, on my right, Poland, on my left, Iran. Players in court. Poland to serve. Line referee. Line referee. Ready. Love all. Court. Point to Iran. Iran get us underway. One love. Ball out. Point Iran. Agnieszka Żmudzka, the number 9 for Poland. Point. Love 2. Court. Point Iran. And her fellow Agnieszka Rybiska, the number 5, just failing to get that one over the net. Point 3, love. Point Iran. Point. Love 4. Ball. Point Iran. Iran racing away with this one at the moment. First 5 points to them. Same format, so Point 2 sets. 5 love. First to 15. Point Iran. Point. Love 6. Out. Point Iran. Imami Arandi Zore, the number 6, watches that one sail wide. Point. 7 Borders love. Al Massa now with the service. Point Iran. Poland not really getting into their stride here. Time out. Poland. Finding that Poland just need one win in the group stages to get through to the semi-finals. Either against Iran or Myanmar, and a timeout has been called. Skoro tego seta mamy już w dupie, to a co robimy zaraz, czy nie? اصلا کلا سرویساشون همون به جلوه کلا
دریافتشون بهتره هم نمیتونن از رد کنن اصلا بریم Yes, players in. Players in. Number 5. Number 26, Imamiyarandi Zore. Yes, Number players 6, ready. Mariam Moradmanesh for Iran. Agnieszka Rybiska Love 8. about to serve for Poland. Agnieszka Zmudska alongside her. Point Poland. Poland get themselves on the board. Timeout always works well. Nice header from Zmudska. Point Can see that a 8-1. little more often from the European teams and Iran. They do like to use their heads more often. Point Iran. Point 1-9. Save in the set by Moradmanesh, and a beautiful Point roll Iran. spike by Zore. Poland 9 out, 7 in. There's a familiar face there. Saw him a little bit earlier. Michal Klimczak playing earlier on the bench, and he's Yes, made ready. a substitution. 10-1. Markiewicz coming on for Poland. Point Iran. Okay. Ready? Adriana Markiewicz, the 1-11. substitute who's come on. He's the one up at the net at the moment. Just fails to get the block in there. And a big pump of the fist at the elbow by Imamiyarandi Zore. Point 12-1. Service for point Poland. There's a substitute, Adriana Markiewicz. Point 2-12. Point Poland. Another point for Poland. Differing experiences and differing goals here. Obviously, Iran be Ready? keen to get through to the Point. semi-finals as quickly and as 12-3. efficiently as possible. They want to get off court, if anything, whereas Poland are here to acquire as much experience as possible. Point. Mentioning Iran. earlier the fact that both of these teams like to use their heads. You can use anything other than your hands or your arms. Point 3-13.
Excellent work. Another fist pump once again from Zoré. Looks like there could be a substitution. Looked like Mariam Moradmanesh was signalling to come off. Iran, jersey number 6 out, 8 in. Okay. And it's number 8, Saide Kamari, who is coming on now. Okay. And she's coming on for set points. There's 11 of them, and she's going to have to serve straight away. So, into the lion's den. Point, set point 14-3. Not a problem for her. An unreturnable service. So, how about that? Saide Kamari comes on and seals the first set for Iran. 15-3. First set won by Iran. Point 15-3. Players 2-minute rest. ناموس آوردم نه اصلا نه نخورد من خودم بدنم خورد بعد زدن یکی خورد Taking care of business, Iran, well and truly. Didn't make it through to the semi-finals. They're almost guaranteed to do it here. Nepal, India, Malaysia, China, so very tough group for them. They finished at the bottom of that group. Doubles here, just 6 teams involved, so far easier for them to get through to the semi-finals. And they're not in the mixed quadrant. There'll be a mixed quadrant event played on Sunday. Thailand, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia in Group A, Japan, Vietnam, Nepal, India in Group B. And then Monday and Tuesday, the last 2 days, we will have men's and women's regu. That's the traditional format, the 3-a-side version. Players in. Iran to get us underway in the second set. Love all. Reminder that we've had a few substitutions. So Rubiska Point Iran. has been joined by Markovic. Markovic having taken the captain's armband. Then as far as Wait. Iran are concerned, Holland. Zoré Come here. has been joined by Kamari. Markovic just asking a quick question of the official. Score. Both Now, Markovic and Rubiska with big smiles on their faces. Save set and then a header. Decent rally this one. Save set. Again a header, I think. So Zoré not looking to sunback spike. Players ready. Nods that one into the corner. Very well done. 2 low. Point Iran.
Kamari, the number 8 on the right, has looked very comfortable since she's come on. Love 3. In. Point Iran. Hold. One side of the net and the other. Four nothing to Iran. So we've been round the horn. Everybody has served. We'll go back to Zore. Kamari at the net. Jersey number 7 Both out. of them with big 9 smiles. Everyone enjoying themselves out here. What you like to see at a World Cup. Smiles, I think, may well disappear. And we've got another substitution. So back on court comes Zmudka. Markovic off again. Rolling substitutions allowed. Dore takes the Point. captain's armband. Love 4. Yes, I was saying it was all smiles, and those smiles may well disappear a little bit later once it all gets tighter in the semi-finals and the final. Zmudska comes on, chests it up, nods it over, and you might have been able to hear the applause in the background. That's from the Polish contingent here, the men's team, Point. who were in action a little bit earlier. 1-4. Michal Klimczak, he's on the bench here as a coach and advisor In. for Point Iran. Team Poland, the women's team. And Katarzyna Jareba, wife of one of the male players, she's the team manager. Point. 5-1. Another good rally. That one's going to go just Point. long there. That's a shame. Zmudska trying to do a sunback, not really a spike, but a sunback. Point. 1-6. Hold. Point Poland. (6-2) to Iran at the moment. And there's a proper spike. A roll spike. Didn't quite come off, but it's nice to see them attempting it. It's the first time that we've had women's doubles at a World Cup. And men's doubles last year at the Titiwangsa Stadium in Kuala Lumpur. Malaysia defeating Thailand in 2 very tight sets in the final, and Iran's men's team winning the second division. It's called Division 1, you have Premier and Division 1, so Iran's men's team winning the doubles in the second tier. Point Poland. Players ready. The 2 Agnieszkas out for Poland. Point. 7-3. Rybiska and Zmudska. Point Iran. Zmudska it was there who just failed to get to that service. Iran halfway there now in this second set. Point. 3. Zore, number 26. 8. Kamari keeps it alive. Zore, beautiful sunback Point. spike. Iran. Worth watching that one again. Watched it nicely. Wasn't the best of sets, but it's always difficult to set when there's Point. only 2 of you doing the work there. So 9-3. Imam Yarandi Zore having to go back, defend, keep the ball alive, and then set it as near as possible to the net. Point Did she Iran. touch that one, or did she leave it? Kamari, she left it. Was it Zore? Yes, it was Zore.
Point. Ha ha, cleverly done. 3-10. I thought, why on earth is she playing that when it's out of play? Third. Point. Iran. What's been called here? Timeout, Poland. Timeout has been called by Poland. حالا بزن ماشاءالله کاس ماشاءالله No raz się pomyliła. دومیش اشتباه کنم داری اولیشو خیلی Players ready? Time's up. Players in. Point. 11-3. Back out after a 1-minute break. Is this going to help Poland reset? Point Iran. Dore does like a header. Another point nearer, getting 2 points for the victory in this group match for Iran. Point 3-12. Point. Good service, Poland. nicely done there by Rybiska. Picks up a point for them. Dore will be a little bit disappointed there that she didn't manage to keep that Point. one up. 12-4. Dore with the service, good deep one. Nicely kept up by Rybiska. Point Poland. That one just ends up going over the net and eluding everyone, I think. Difficult for Kamari to anticipate that one, but it was nicely left, I would say, by Smutska, who's on service now. 5-12. Point. Another Poland. attempted sunback spike by Zore. Poland up to 6. They've doubled the amount they got in the first set. Players Every ready. point's going to give them a lot of confidence. Point 12-6. Point Poland. And there is the confidence. Big smiles from the twin Agnieszkas, particularly Smutska, with a little bit of a roll. I'm not going to call it a roll spike, but it was still a roll. Rolled the leg over and got the point. 12-7. Can they keep this one alive? Not quite. Iran. Depth is always difficult to come to terms with in doubles. Point 13-7. Point Iran. Nice header from Zore, sets up 7 match points. Point 7, match point 14. Smutska serving to stay in the match. The save, the set, is it going to be a spike or a header? It's a spike. Point. That's the way to finish it off. A Iran. roll spike by Players Imam baseline. Yarandi Zore gets the final point. Iran take this in straight sets, defeating Poland 15-3, 15-7.
Good performance though by Poland, Match. particularly getting 7 points on the board Won by in that second set. Iran 2-0. First set. Everyone seemed to enjoy themselves out there, which is the main thing. Everyone got some game time as well. 15-7. Substitutes coming Players, off and on. shake hand. So Iran go top of women's Group A.
We are Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
are Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
are Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.
Sepaktakraw. Sepaktakraw.
Sepaktakraw. We are Sepaktakraw.